Good morning, students. Welcome to TalentBlazer, India's latest platform to provide you the solution for all your UGC net related issues and problems. So, in today's video, we'll continue the Unit 6, and I'm your friend in this journey, and I'm your teacher and your friend in this journey. And we have started Unit 6, we have covered the management theories, we have covered leadership theories as well. So if you haven't watched those videos, please do watch those videos first and then start watching this one. Right, so there is a series, there is a sequence that has to be followed. So we are covering the paper 2 commerce, and the subject code for the same is 08, and this is unit 6. And we have started unit 6, and this is the third part in unit 6. So in today's class we'll start with what is human resource management. So even before I start with what is human resource management, it is important to know what is human resource, because everyone has studied management. Even I have discussed in few of my videos as well what is management. So how is human resource management different from management? It is a valid question and a genuine question. So human resource management is a part of management, and it certainly talks about only human resources. So the next thing that will cross your mind, what is human resource? Let's suppose you are working in an organization. Let's take an example of your teachers who are teaching you in that particular college or that university. So, who are they? Are they only employees? And don't all of them have a bigger contribution to towards that particular college or university? Yes, they do have. And certainly employer has also look after them and their needs as well. So human resources zone is a newer concept, has been developed and has been evolved. So human resources are those which make things work. If I have to simplify for you, let's suppose there are factories, there are machine in a factory. So those machine won't operate themselves. Even if we talk about automation, in that case even you need someone to look after what how is machine operating. So those are the human resources that make the capital work. So if we do go by the definition, every organization, be it your college, be it any business, large or small, they use a variety of capital to make the business work. Right, so capital include cash, valuables, or good used to generate income for a business. Now, no matter the industry, all companies have one thing in common: they must have people to make their capital work for them. तो capital क्या है? कोई मशीनरी है, खुद से तो काम नहीं करेगी, कोई तो आदमी चाहिए ना जो देखेगा. And that's what human resource is. I hope ये सबको समझ में आ गया human resource क्या है. इसलिए because we are going to study about human resource management, and for that it's very important to know what is human resource management first. To study human resource management we need to know what is human resource first. I hope इतनी clarity सबको आ गई हो कि क्या इसका क्या मतलब है, right? So now we will continue with the definitions part. हमने human resource जान ली कि human resource क्या होता है. But now the next thing that we should know, what is human resource management. So there are few definitions given by the management thinkers that one should be aware about. आपको exactly याद नहीं करनी, because you won't be getting a question on that define HRM. आपको कोई exactly ये question नहीं मिलेगा, but you should have the knowledge. कोई आपसे पूछे कि HRM क्या होता है तो आप जवाब दे सको. So you should know what is HRM. So HRM is a function or activity aiding and directing working men and women in maximizing their contribution and satisfaction in employment. तो ये डेल ह्यूटर, वन ऑफ द मैनेजमेंट थिंकर्स, उनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है. इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि एचआरएम एक फंक्शन है या एक्टिविटी है, कि फंक्शन है या एक्टिविटी है जो मदद करता है, जो एड करता है और डायरेक्ट करता है किसको? वर्किंग मैन एंड वुमेन. आप कहीं काम कर रहे हो, आप कहीं के एम्प्लॉय हो, आपको एचआरएम हेल्प करेगा, एक डायरेक्शन देगा कि आप अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर पाओ, आप अपना सेटिस्फैक्शन काम में मैक्सिमाइज कर पाओ. सो this definition clearly states that HRM is a function or activity aiding, helping working men and women in maximizing their contribution and satisfaction in employment.
So it helps workers, including all those who work from unskilled common laborers to corporation president or public administrators. So if you have this question in mind, is HRM only for top managerial level? No, it is for everyone, for unskilled to common laborers to corporation president even. Combine their efforts with those of others in providing the services and product we all want. So basically इसका कहने का ये मतलब है कि HRM एक फंक्शन है, यू नो आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, लेट्स सपोज यू वर्क इन एक्स वाई जेड कंपनी, तो आप वहाँ पे काम कर रहे हो एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट प्लेस, तो एक एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके पास जाए एंड आस्क यू व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द इशू दैट व्हाई आर यू नॉट वर्किंग टू योर पोटेंशियल, व्हाई आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एंड लेट्स सपोज यू आर टेकिंग लीव्स, आप बहुत एब्सेंट हो रहे हो अपने काम पे, सो देयर इज हाई एब्सेंटिज्म, सो उसके रीजन पे एक एचआर मैनेजर को पूछने और एचआर मैनेजर को डिवाइस करना है फिर अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान, सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट मोर, आप कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर सको और अपना कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज कर पाओ, राइट? So this is the definition given by Dale Gooder. Now I'll talk about the definition in literal terms. In literal terms, so it is the process of employing people, training them, compensating them, developing policies related to them, and developing strategies to retain them. People have this perception that HRM is related to only recruiting the employees. No, HRM is a wider concept. You have to recruit employees, you have to train employees, there are on the job training, there are off the job training, you have to train them, you have to develop them, and you have to make sure that you do retain them. And why do we have to retain them? It's a basic thing that you should be aware about, that retaining is very crucial. It has been crucial, it has become so much important in today's time because getting a skilled worker is too difficult, right? And the cost invested from getting to actually transform an unskilled worker to a skilled worker, it's huge. You cannot do it again and again, not every firm can do it again and again. So you want to retain your skilled employees, मतलब बेसिकली ये कि लोगों को ये लगता है कि एचआरएम बस एक प्रोसेस है जिसमें आप रिक्रूट करते हो, आप रिक्रूटमेंट के लिए बुलाते हो, लोग आपके पास एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद यू सिलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। नहीं, सिलेक्शन के बाद भी एचआरएम का जॉब खत्म नहीं होता, यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि आपने लेट सपोज एग्जामिनेशन करा लिया, अब उन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया बट उन्हें नहीं पता कि काम क्या करना है, काम के लिए आपको ट्रेन करना पड़ेगा, राइट? आपने ट्रेन करा, आपने ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के साथ उन्हें फेमिलियर करा है, कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो ट्रेनिंग पीरियड लंबा होता है, उसमें पैसे लगते हैं। आप ट्रेन कर रहे हो, आप कहीं से एक्सपर्ट्स बुला रहे हो जिससे आप ट्रेन कर सको अपने एम्प्लॉयज को, राइट? सो दैट्स एक्सपेंसिव प्रोसीजर। और उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू रिटेन योर एम्प्लॉयज। आपने किसी पे पैसा खर्च करा है, आपने इन्वेस्टमेंट करी है, आप यही नहीं चाहते हो कि वो इन्वेस्टमेंट waste हो जाए, right? So you do want to retain them, and that's what HRM is. It's not just about recruitment. It starts from recruitment, employing people, and it goes till retaining them. So ऐसा नहीं कि सिर्फ recruitment से start होती है, recruitment से भी पहले you have to plan. That's human resource planning, and that is crucial and important as well. Like if I do talk about human resource planning, आपको let's suppose we are talking about XYZ organization. XYZ organization फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाहती है, लेट्स सपोज दे आर ऑपरेटिंग इन गुड़गांव ओनली, गुरुग्राम एज ऑफ नाउ, उनको एक और ब्रांच खोलनी है इन दिल्ली और नोएडा। सो आप एक और ब्रांच खोलना चाहते हो, यू नीड मोर एम्प्लॉयज, राइट? यू नीड मोर एम्प्लॉयज, यू वांट टू एक्सपैंड, तो यू विल प्लान अकॉर्डिंगली दैट इफ यू डू ओपन a new branch, so how many number of employees will be required, so you will plan accordingly, and there is a thing called demand forecasting, that's the thing in human resource planning. So जो human resource planning में ना एक demand forecasting भी चीज़ होती है, उसके accordingly आप estimate लगा सकते हो कि इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी in future जब when we will expand our operations, और उसके accordingly आप देखोगे कि कहाँ से supply मिलेगा, supply as in the sources of recruitment, that's very important, राइट? सो आप एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट देखोगे, किसी एजेंसी को कांटेक्ट करोगे कि आई नीड 100 men, 100 एम्प्लॉयज, तो ये सप्लाई फोरकास्टिंग होती है, डिमांड फोरकास्टिंग, दिस इज इवन बिफोर द रिक्रूटमेंट स्टार्ट, ये आपको पहले से ही प्लान आउट करना पड़ता है।
सो दैट्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HRP. आई होप सबको समझ में आ गया होगा थोड़ा HRM क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एंड व्हाट इज HRP. तो आई थिंक सबको इतना क्लियर हो चुका हो अब तक, राइट? एंड विल मूव फॉरवर्ड. एंड देर इज अनदर थिंग, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू लीव अ लाइक. आप लाइक लीव करो. आप अगर कुछ समझ नहीं आता, या यू वांट मी टू कवर समथिंग स्पेसिफिक, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, और कैन यू प्लीज कवर दिस इन योर नेक्स्ट वीडियो, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें आप, वी हैव टू मेक दिस लर्निंग फन, इंटरैक्टिव, एंड आई नीड योर पार्टिसिपेशन एज वेल. तो आप पार्टिसिपेट करो, इस लर्निंग को, इस जर्नी को फन बनाओ, और जितना आप ये करोगे उसका उतना ही आपको रिटेन करने में ईजी होगा फॉर द एग्जामिनेशन एज वेल. सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन, राइट? ओके, सो if you now are able to know the definition, आपको definition समझ में आ गई. So the next thing that we have to cover is objectives. Objectives क्या है HRM के? Why do we need HRM? क्या मतलब क्या है HRM का? जरूरी है क्या ये होना? जरूरी है, right? So firstly, HRM contributes by assuring a rich and continuous supply of human resources. तो आपको एक रिच और एक कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मिलना जरूरी है. लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन. इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेनी एम्प्लॉयज विल लीव that particular organization because either they have reached their retirement age, superannuation, or they they shift to some other place, or they are getting a better offer from somewhere else, so they might switch, right? तो ये possibility और ये होता भी है बहुत जगह. So HRM contributes by assuring a rich and continuous supply of human resource. Further, to make organization effective and efficient, HRM aims at coordinated efforts of the competent managers and workers towards the ultimate goal. तो एक ये थोड़ी मतलब हुआ कि लेट्स सपोज आपकी IQ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छे, आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है? लेट्स सपोज हम किसी एग्जांपल लेते हैं ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. हमने किसी एंटरप्रेन्योर को किसी जॉब में डाल दिया, राइट? इफ यू डू टेक एन एग्जांपल वेयर वी हैव recruited an entrepreneur for a particular job, तो there could be a problem. Now you must be thinking कि क्या प्रॉब्लम आएगी. एक एंटरप्रेन्योर तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होता है, उसको तो मार्केट के बारे में बहुत पता होता है, राइट? बट देयर कुड बी इश्यूज. आई विल टेल यू व्हाट इशू दैट could be. Because firstly, you know आपको जो कंपनी में हायर करा जाता है इन एनी कंपनी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट could differ from what your organization goals and objectives and what your vision is. तो उसमें डिफरेंस आ सकता है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन there are chances that we might see a difference between the vision of someone we have hired who could be a great entrepreneur, and working with the organization. The organization could have different views on something, and that difference in views, won't let that employee reach his or her full potential. तो जो एंटरप्रेन्योर होगा वो कंपनी में आके काम नहीं कर पाएगा ढंग से, बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, राइट? So the general objective of HRM is to contribute towards realization of firm goal. जब भी कोई हायरिंग होती है फॉर एन HR मैनेजर, जब भी कोई हायरिंग करता है फॉर एनी एम्प्लॉय, तो उनके दिमाग में होता है कि एक जॉब रोल है, हम इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए हायर कर रहे हैं. तो उस जॉब रोल में हमें ये इंसान सही लगता है बिकॉज ये हेल्प करेगा हमें हमारे फर्म के गोल्स अचीव करने में, राइट? द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द HRM इंक्लूड द फॉलोइंग. द फर्स्ट इज efficient utilization of people skills and abilities. Now, how ये कैसे होता है कि efficient utilization of skills and abilities? This is possible whenever you do fill up an application form, right, while you are applying for a job in some organization. Let's suppose XYZ organization. So you fill out the details, you mention all the details that I have worked there, this is my education qualification, I have this training done, and this is my experience. Now your the employer will read the application form, and they'll get to know, okay, this is what my employee is like, the education qualification, what the employee can do. देन यू हैव टू प्लान इट आउट. आपको प्लान इट आउट करना पड़ेगा कि कैसे यूटिलाइज करें उनकी स्किल्स और एबिलिटीज. आपको पता है दे आर गुड इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, इफ दे आर गुड इन मार्केटिंग, तो आप उनको मार्केटिंग का ही जॉब दो.
आप उन्हें किसी और मैनेजमेंट या किसी और डोमेन में जॉब मत दो, उन्हें सिर्फ मार्केटिंग का जॉब दो, एंड दैट वुड बी अ better way to utilize their skill and ability. Now there should be a provision of trained and motivated employees. तो आपने मैनेजमेंट थ्योरीज पढ़ी है, तो मैनेजमेंट थ्योरीज में जैसे मैंने बताया कि मैग्रेगर थ्योरी एक्स, उसमें ये बोल रहे थे कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो रिलक्टेंट होते हैं, उन्हें काम करना पसंद नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता, बट स्टिल देयर आर फ्यू एम्प्लॉयज विच आर नॉट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ any reason. There could be any reason, personal reason, or they are not liking to work over there in some department. Now as an HR manager, it becomes your duty to know, okay, this is how I have to motivate my employees, this is how I have to train my employees. And training is very crucial because ट्रेन करके आप बता सकते हो कि यार ये काम करना है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू डू द वर्क, एंड देन यू विल गेट एफिशिएंट एट इट. Let's suppose we are talking about someone who is working at the factory, for the first time. There are chances that that worker will lead to wastages. आप कहीं पे काम सीखते हो इनिशियली तो आप कुछ खराब करते ही हो, आप पहले दिन में ही खाना बनाना तो नहीं सीख गए होगे, आपने जब खाना बनाया होगा पहली बार तो गलत बना होगा, कुछ ना कुछ खराब हुआ होगा. कई बार काम खाना बनाते बनाते आफ्टर अ व्हाइल यू फाइनली रियलाइज कि ऐसे बनता है. नाउ यू नो. Similarly, if you do talk about factory, उसमें एक worker, if some worker is there and there's getting to know how to operate the machine, how to operate the machine efficiently and effectively. So after a while, after doing the work on that machine for a couple of days, for a week or a month, then you get to know what's the right way to do it. So there should be a provision to train and motivate employees, else they will never know what is the right way to do it. Now, the third thing, very important objective, you have to increase the employees' job satisfaction. Let's suppose I'm working in particular domain and I don't like that job. मुझे वो job ही नहीं पसंद. मेरा job satisfaction कैसे बढ़ेगा? So, as an HR manager, as an employer, it's your duty to make sure that you increase the employee's job satisfaction, give them a better pay, provide them holidays, and give them flexible working schedule. कुछ भी extra provide करो, right? तो उनसे उसका job satisfaction मिलेगा. Build a गुड ब्रांड रेपुटेशन. आप किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करते हो तो आपको खुशी महसूस होती है, यू विल फील प्राउड. सो these are few objectives of HRM. I hope I have made myself very much clear. आपको हमेशा याद रहे, these are the few objectives of HRM. Pretty much easy to understand.